Good evening to all of you. So in last class we have discussed about this topic, that how rise and growth of Nazism took place in Germany. Okay, you have maintained running notes also. I have discussed all important aspects of that Nazism. So let's first revise it. Okay, if you get some new points, so you must include it in your notes. But I've already discussed the entire essence of the topic, and I have discussed that much which we can write in our exam. ठीक है ना? Okay, so uh, now we need to discuss a few aspects here in Nazism. Okay, so that I have already discussed with you that when we talk about this term Nazi Germany, right? If we talk about this term, that is Nazi Germany. So Nazi Germany simply means what? That we are talking about Germany between the period of 1930 and 1945. The concept is very simple. It's also popularly known as Third Reich. It's not first, not second, not fourth. Nazi Germany in this period is known as Third Reich popularly by the historians. Okay. Now, Adolf Hitler and the Nazi Party, they controlled the country during this period. The name of Hitler was Adolf Hitler, transforming it into a totalitarian dictatorship. So, in Nazi Germany, what was the political system in Germany? So, the answer is very simple. It was totalitarian dictatorship. Okay, it means that this political system is different from the system which we called, okay, democracy based, okay, liberal, you can say that rights based system, capitalistic order based system, and parliamentary system. ये इन सब से क्या है, अलग है. Liberal order based system, democratic system, capitalistic system, parliamentary system, it is different from all that. Got it? Is it a socialistic model? Yes. No, sorry, it's also different from the socialism that was in practice in Russia. Why I am saying this? The reason is very clear. What about the rights to private property in Germany and Italy? It was maintained. But when we talk about socialist Russia, after 1917, the right to private property was taken. In Germany, the right to private property was only not given to Jews, because Jews were not considered the citizens. Clear? So this is a kind of third way or the third alternative. One alternative was capitalism, capitalist based system and order. The second was socialism, 1917 onwards, and this is a third way, third alternative before the world. Okay, now the next point here is the word has been derived. I have already discussed with you. Reich concept I have already discussed in the classes. Now we are moving ahead. The word Nazi, it simply means national socialist. Clear? Nazi means national socialist. And from this term, socialist, national socialist, these two words have been clubbed together, and that is Nazi. We already have discussed this. The emergence of the Nazi party we already have discussed in our classes. Okay, this all we have discussed. Okay, that how Nazi party emerged. Okay, now this event I have already discussed with you. We are all okay. Push. What happened here? Okay, the Hitler Nazi party tried to hijack power by military takeover. Okay, it happened in which year? The year is 1923. What happened? Hitler, okay, and his followers staged the beer hall push in Munich. Munich की घटना है, but they failed here to take over the government. Okay, in a state that is Bavaria in the southern Germany. तो जर्मनी में southern Germany में एक state है. So there they tried to take control of the government forcefully, but they failed. So obviously, if you fail, this is a task of revolt, rebellion. So you will be charged for this. So after this failed attempt, what will happen? Hitler was convicted for treason, and he was put to 5 years in prison. जेल में 5 years के लिए. बट मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि 5 years नहीं रहा वो जेल में. He spent less than 1 year behind the bars, during which time
he dictated Mein Kampf. That is his political autobiography. This book is the political autobiography of Hitler, right? Right. This book is the political autobiography of Hitler. This book is very famous. Okay. And what happened? This event, okay, plus the trial during this event made Hitler very popular. He became a national figure. Okay. And after prison, it means when he will come out, he will again make efforts to build the Nazi party. And finally, he will gain power via legal political methods that I have discussed in the classes. What is legal political methods? Elections. 1930, 1932. In elections, Nazi party got majority of vote share that I have already discussed with you. Now, sales of Hitler's political autobiography, Mein Kampf, sometimes referred to as Bible of Nazi Party. This book is also known as Bible of Nazi Party. And from 1933 to 1945, free copies were given to every newly wed German couple. They were given free copies of the Mein Kampf. But after World War II, the publication of Mein Kampf in Germany became illegal. Obviously, it will become illegal, okay? Because this world order will change after Second World War. Now, what are the key points here that I have already discussed with you? Now we are going to discuss the features or the doctrines of Nazism. So the first feature and doctrine of Nazism is it was a fluid thought system. What is a fluid thought system? Fluid thought system means, okay, it took shape. What if someone asks you what was the principles of Nazism? So these principles were not defined on a single day. Okay. These principles took shape over the years. And if we collect, okay, some of the information given at different places plus some of the ideas, some of the speeches of Hitler, okay, if you will collect all these piece of information, this will become what? Nazi principles or belief. सबको एक साथ मिलाओ. For example, the party, Nazi party 25 points drafted in 1920. तो थोड़ी बहुत समझ नाजिस्ट आइडियोलॉजी की वहां से होती है. So we get a little bit understanding from this parties, okay, 25 points. Then Hitler's memoirs are there. From Mein Kampf also we get some idea about what is Nazism. Mein Kampf, उसकी political autobiography पढ़ने के बाद भी कुछ idea लगता है that what is the Nazism. In many respects, Nazi ideology was defined by Hitler by himself. अगर सही मायने में देखा जाए तो हिटलर ने खुद ही डिफाइन किया कि what is the Nazi ideology, and it was contained in his speeches, policy statements and orders. Okay, when you combine all this piece of information, the speeches of Hitler, the policy statements of Hitler and the orders of Hitler, okay, plus Nazi party 20 points, if you will combine all this, so you will get a picture of about the principles and beliefs of Nazism. ऐसे हम Nazism के बारे में जान पाते हैं. Got it? Okay. So it was a fluid thought system. Okay. Now the next point is, okay, older brother or some historians also write elder sister. तो इसमें परेशान नहीं होना है, right? It is just the analysis and the interpretation of the historians. So I have already discussed with you that fascism as the older brother or elder sister of Nazism, because this Nazism we see in Germany from this period 1932-33, okay, to 1945. और fascism कब है? From 1922 to 1945. तो पहले कौन सी idea? Which idea takes shape before? So obviously it is fascism. And we also have discussed that Nazism is what? Nazism is fascism plus racism. We will add one more element and it will become Nazism. Okay, so fascism, often dubbed as or often said as older brother or elder sister of Nazism. Okay, because देखो नाजिस्ट आइडियाज आर ऑल्सो फासिस्ट आइडियाज. हमेशा याद रखना, हिटलर को हम फांसीवादी भी कहते हैं, फासिस्ट भी कहते हैं. नाजिज्म इज अ पार्ट ऑफ इट. क्लियर? Fascist ideology means totalitarian ideology, dictatorship based ideology.
So first appeared in Italy during World War One, devised largely by Benito Mussolini. Fascism rejected socialism, that I have already discussed with you. Okay, fascism will reject socialism and democracy also. So it is a third option that is available to the people, and it is authoritarian political and economic system. Authoritarian political and economic system where the authority will be concentrated in the hands of a single leader. A single leader will dominate. A single leader will have all the authority concentrated in his hands. That's why it is an authoritarian based system. Democracy may it will not happen. In parliamentary system it will not happen. Power is not concentrated in the single hands, but it is concentrated in the single hands. Why different from socialism? Because the right to private property was given. The rights of capitalists were protected. Now, Nazism had some similarity to both. Fascism also it had some similarity. I have already discussed with you. This part we have already discussed in our class, that if we include what? Fascism with racism. Fascism, features of fascism plus racism. If you combine both, this will become what? दोनों को मिला देने पे क्या हो जाएगा? This is Nazism. Fascism plus this is Nazism. Now here I would like to explain one thing. Here I have written racism. Clear? So you can write in your notes. Okay. इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिए. What is racism here? I have already discussed with you, but you must know the technical meaning of this. So here we are talking about racism. Draw this simple structure, you can easily understand. So racism. So in Germany, few races, केवल Jews नहीं था. Okay, other than the Jews also, but Jews were the most targeted group. A few races were considered to be inferior. So here what we see is that few races were considered to be inferior. Few races were considered to be inferior. Now what are these few races? So the most popular among these races were Jews. We all know this. Apart from this, there were other groups also. For example, Slavs were there. For example, Romanis were there. So they were also considered inferiors. But सबसे ज़्यादा targeted group कौन सा था? Jews. So that's why we came across this word, okay, anti-Semitism. Okay, there and the here the campaign against Jews will be called anti-Semitism. Anti-Semitism. They are considered inferior. Okay. Now, Nazis embraced what? Nazis adopted what? They embraced pseudo-science of eugenics. And what is the pseudo-science of eugenics? Okay. So देखो, if you believe in this principle that the society can be improved upon by adopting the policies like genetic hygiene. हॉलीवुड में इस पर फिल्में भी बनी हुई. Genetic hygiene means what? Those who consider inferior should be wiped out. Clear? This is maintaining genetic hygiene. So this is what? Is this the basic principle of science of eugenics? No. It is the pseudoscience. For example, we use the word pseudo religion. ठीक है, जो धर्म के धोखे में रख के काम किया जाए. ओके, pseudo nationalism मतलब झूठा राष्ट्रवाद, दैट इज pseudo nationalism. उसी तरह से pseudo ओके साइंस ऑफ यूजेनिक्स मतलब साइंस के थियरी को ही डिस्टॉर्ट करके रख दिया. ये बताओ कहाँ ये लिखा है कि आप अपनी सोसाइटी को और बेहतर बना सकते हो इस तरह की पॉलिसी को फॉलो करके? कहीं नहीं लिखा ना. बट हिटलर इज डूइंग दिस. सो दिस इज अबाउट बिलीव इन द स्यूडो साइंस ऑफ यूजेनिक्स. क्लियर? कि कैसे फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को अपने फिक्शन की हेल्प से डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट किया जा रहा है तो साइंस की थियरी, बट व्हाट दे आर डूइंग दिस. ओके, सो यू कैन राइट हियर दैट हिटलर and his party believed in pseudo. I am writing pseudo.
pseudoscience of eugenics. Pseudoscience of eugenics. Hitler and his party believed in this pseudoscience of eugenics. Clear? Where they claimed that, read this, they believed that, they believed that, they believed that the society can be further improved upon. They believed that the society can be further improved upon. They believed that the society can be further improved upon by following or adopting policies of by following or adopting policies of genetic hygiene. They believed that the society can be improved upon by following or adopting the policies of genetic hygiene. Clear? Genetic hygiene. And in order to maintain genetic hygiene, they will do what? Okay, right? Wiping out the races, wiping out the races, wiping out the races which they consider inferior, genocide, holocaust, genocide, holocaust. Okay, compulsory sterilization. ठीक है, इससे क्या होगा? बच्चे पैदा नहीं होंगे. In this way the races can be controlled upon. This is what? Compulsory sterilization. They will also do this. Compulsory sterilization. Okay. यूथेनेसिया को क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज एनी टर्मिनली इल पेशेंट, ठीक है, तो यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि ये राइट मांगना, ठीक है, कि उसकी मर्जी से उसकी जान ली जा सकती है, दैट इज यूथेनेसिया. ठीक है, यूथेनेसिया जैसी चीज़ों को क्या करेगी ये गवर्नमेंट? वैलिड करेगी. मेरी बात समझ गया ना? इसका मतलब क्या है कि अगर आप वीकर हो, अनफिट हो, इफ दे कंसीडर दैट कमज़ोर, बीमार या इस तरह के लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी पॉलिसीज़ में बिलीव करने वाली गवर्नमेंट थी नाजिज्म. ठीक है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है? ओके, देयर आर स्पेशल पॉलिसीज. हमेशा चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो. पॉलिटी में देखोगे कि द गवर्नमेंट फेवर्स, ओके, द वीकर क्लासेस. ओके, द गवर्नमेंट हैड स्पेशल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. डेमोक्रेसी में जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा, वी ऑल्सो टॉक टू रिकग्नाइज द राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी. हम उनके राइट्स की भी बात करते हैं. ये क्या कहेंगे? ये उनके राइट को एक्सेप्ट करेगी? नाजिस्ट गवर्नमेंट नो, कंजर्वेटिव कहेगा ये राइट को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आने वाली नस्लों को और क्या कर देना? बर्बाद कर देना. दे बिलीव इन, ओके, और वो एक टर्म यूज करते हैं आर्यंस. ओके, तो इंडिया में भी हमने वो टर्म यूज किया, बट द सेंस इज डिफरेंट हियर. गॉट इट? दिस इज द आइडिया. सो दैट इज व्हाट जेनेटिक हाइजीन. यू कैन ऑल्सो राइट हियर दैट euthanasia, making euthanasia valid, making euthanasia valid. Okay, and they believe that Nazis are superior races. What is their belief? Their belief is Nazis are superior races. In सब में Nazis क्या है? They are the superior races. And when we say superior races, it means they are physically strong, they are more intellectually advanced. Okay, Nazis are superior races means what? They are physically strong. Read this point. It means they are physically strong. Okay, they are physically strong. Second point, they are more intellectually advanced. They are more intellectually advanced. वो ज़्यादा intellectually advanced भी हैं. Clear? Plus, okay, more culturally fit. They are more culturally fit also. They are more culturally fit also. Clear? And here Nazis will use a word Aryans for them. Aryan race. वो अपने आप को क्या कहेंगे? Aryan race. So you don't have to confuse by this word.
Aryan race. Here, what is the meaning of Aryan race? Read this. Okay. The races of nomadic. Okay. ऐसे लिख लो. Means क्या कहेंगे इसको? With okay, blonde hair and blue eyes. There are some features of this race. Okay. तो वो अपने बारे में एक आइडेंटिटी है with blonde hair, blue eyes. So they determine some feature of these races. ये race कौन है? Obviously they are talking about the German people, and they will be considered as the pure races. उन्हीं को ये क्या कहेंगे? They will be considered as the pure races. So they will talk like this. This is racism. Now what is Nazism? Include all the features of fascism plus this feature, racism, is equal to what? Nazism. Got it? Clear? This is Nazism. So if someone discusses you, you can now, okay, more comfortably answer this question, that why they talk about Aryans, what is the pure races. और यूरोप में देखो ये चीज़ थी, that they believe that some races are, और ब्रिटिश also believed, अंग्रेज भी तो मानते थे ना. वाइट मैन बर्डन शिप थ्योरी क्या है? सिविलाइजिंग मिशन थ्योरी क्या है? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड क्या है? दैट दे आल्सो बिलीव्ड इन द सुपरिटी ऑफ रेसेस. ये सब नतीजा है एग्रेसिव नेशनलिज्म का. ठीक है ना? अपने नेशन प्राइड और सेंटिमेंट्स को ज़्यादा ऊपर रखने का. So if you believe in internationalism, this will not happen. And India, from the ancient times, it believed in the ideal of Vasudhaiva Kutumbakam. It is what? Internationalism. Got it? Raja Ram Mohan Roy, आज मैंने सुबह बताया, believed in what? Internationalism. Jawaharlal Nehru believed in what? Internationalism. Okay? तो आप देखो कि इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बावजूद, ओके, वी आर अ मल्टीकल्चरल स्टेट, वी आर अ सेकुलर स्टेट. ठीक है, कभी हमने इसको अपनी वीकनेस बनने नहीं दी. ठीक है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, अच्छा देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. नाजीज हैड नो इंटरेस्ट इन स्टार्टिंग एन इंटरनेशनल मूवमेंट और चेंजिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर ओन कॉन्टिनेंट. नाजीज का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था. क्या कैपिटलिस्ट कंट्रीज का ऐसा इंटरेस्ट था कि कैपिटलिज्म एज एन आइडियोलॉजी दूसरे कंट्रीज में भी जानी चाहिए? यस, इट वाज देयर इंटरेस्ट. व्हाट अबाउट सोशलिज्म? क्या सोशलिस्ट कंट्रीज का ये इंटरेस्ट था? व्हेन सोशलिज्म स्टार्टेड, यस, दीज वेर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट्स. ये इंटरनेशनल मूवमेंट था. ठीक है, आइडियोलॉजीज को दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक एक्सपेंड करने की कोशिश थी. बट यहाँ नाजिज्म का ऐसा कोई आउटलुक नहीं है. राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. द चीफ कंसर्न वाज रिस्टोरेशन ऑफ जर्मन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुप्रीमेसी. यानी जर्मन नेशनलिज्म ही सबसे पावरफुल फैक्टर था. नाजी जर्मनी का मेन फोकस कहाँ है? रिस्टोरेशन ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुप्रीमेसी इन यूरोप. यूरोप में फिर से बैलेंस ऑफ पावर को अपने फेवर में लाना. पेरिस पीस समिट से जो मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस हटाए लगाए गए थे, उन मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस को डिनाई करना एंड अगेन टू रिस्टैब्लिश मिलिट्री सुपीरियरिटी. ठीक है ना? जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना? डिनाई करना एंड अगेन टू रीस्टैब्लिश इकोनॉमिक सुपीरियरिटी. दिस वाज द मेन आइडिया. नाउ सोवियत सोशलिज्म में क्या देखने को मिलता है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट 1917 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया, सोशलिस्ट इन रशिया, they wanted to export their system worldwide. इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट. तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का ये प्रयास है कि रशिया से बाहर एक्सपेंशन हो. यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट ही यही. ओके, एक्सपेंशन ऑफ दिस आइडियोलॉजी इन अदर कंट्रीज. बट नाजिज्म का ऐसा कोई इम्पैक्ट, वो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. येस, दे वांट टू कंट्रोल ऑल जर्मन टेरिटरीज. ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द कोर डिफरेंस. नाउ the another most important feature is authoritarianism. Authoritarianism was the feature of fascism also and it was the feature of Nazism also. ये टॉपिक आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर बनाने में हेल्प करेगा. समझ गया ना? ओके, ऑथोरिटेरियनिज्म. नाउ ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल गवर्नमेंट,
and with extensive state power. It means in authoritarian government regime, the rights of the individuals will be compromised. जैसे इंडिया में क्या है, there is one entity that is state, another entity is individual, and balance of power. ठीक है, a state could never be authoritarian state for that reason. Okay, a state could not establish its monopoly control, okay, over the citizens. स्टेट फ्रीडम न स्नैच कर पाए, फॉर दिस इंडिविजुअल्स को हमने क्या दे दिया है, फंडामेंटल राइट्स, और स्टेट को कुछ गाइडलाइंस है और उन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए स्टेट को पॉलिसीज बनानी है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. क्लियर? some directive principles are there, and whenever a state will formulate policies, so state will take care of all those directive principles, that is called DPSP. Okay, तो यहाँ पे बैलेंस है. ऑथोरिटेरियन रिजीम में the power will be concentrated in state, the decision will be made by a leader, okay, and this leader will have almost absolute power. इसका मतलब state is powerful. स्टेट में क्या है, वन पार्टी इज पावरफुल. इन वन पार्टी हु इज पावरफुल, वन लीडर इज पावरफुल, एंड दैट लीडर हैज एब्सोल्यूट पावर्स. एब्सोल्यूट मीन्स okay, there is no any restriction on the power of the ruler. रूलर की शक्तियों पे कोई अंकुश ही नहीं है, right? There is no any restriction. Okay, so this is the point. Okay, and that this kind of leader, a single leader having absolute power concentrated in his hands, is known as Führer. So for Hitler, which word we use? आपने schools में भी पढ़ा होगा, Führer. Why we use this word Führer? It means a single leader with absolute power. We are using this word for that single leader, Führer. Okay, all political authority and sovereignty rested with this leader. सारी की सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी और सॉवरेनिटी, हियर देयर इज नो, सॉवरेनिटी डज नॉट लाइज इन द पीपल. यहाँ पे पब्लिक सॉवरेनिटी नहीं है, पीपल सॉवरेनिटी नहीं है. सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ दैट रूलर, सॉवरेनिटी लाइज इन द स्टेट. So this kind of political system is called what? Authoritarianism, right? All important decisions in that state will be taken on the behalf of that ruler. And the term which we use here is Führer principle. Okay, this is the kind of the political system that was in Germany between this period. No other political parties or organizations other than the NSDAP could be tolerated. It means one party, no opposition. Okay, no other party can be tolerated. Other groups with political influence, such as unions, churches, would be restricted or abolished. देखो, state के अलावा भी in any country there are various groups which influence the public policy. Okay, which influence, you can say that, the minds of the people. So all such groups which can mobilize the people under their banner, all such groups will be restricted. उन सबको क्या किया जाएगा, restrict किया जाएगा. Obviously in this situation state will be the most powerful institution. The word we are using here is totalitarianism. This is another feature of Nazism. It is also the feature of fascism. दोनों का है. And what is totalitarianism? It was government duty not just to devise policy but to shape, coordinate and regulate society for the betterment of the nation. देखो, in democratic country what we see, that our government does what? Devise policy. गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, बट क्या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स में है इन इंडिया, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? ओके, ए स्टेट विल इंटरफेयर बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ दैट इंटरफेरेंस, एंड हियर द स्टेट इज इंटरफेयरिंग, स्टेट इज अफेक्टिंग all the aspects of life. State is making policies also. State policy तो बना ही रहा है, and it is also controlling all the aspects of the society. And what is the excuse? Why is this much power is needed by the state? State को इतना power क्यों चाहिए? तो state has only one excuse.
state says that we are doing all this for the betterment of nation. इस राष्ट्र की भलाई के लिए हम ऐसा कर रहे हैं. उनके पास एक ही चीज है, नेशनलिज्म. ठीक है, कि अगर जर्मनी को यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री देखना चाहते हो तो स्टेट को ये सब काम करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज द पॉइंट हियर. नाउ एट अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट मस्ट हैव द अथॉरिटी. गवर्नमेंट क्या करेगी? विल कंट्रोल द प्रेस एंड द यूनियन. दे विल कंट्रोल इट. ओके, दैट इज totalitarian government. The government will do what? The government will restrict civil liberties and individual freedom. आपकी civil liberty को curtail कर लेंगे, individual freedom को curtail कर लेंगे. The government will do this. They will restrict the civil liberties and individual freedom. And the government will manage this system of education. And while managing the system of education, they will design the syllabus and the curriculum and the content in such a manner that the school going children, okay, their mind could also be influenced by Nazi ideology. बच्चों को जो बात आप स्कूल में सिखाओगे, ठीक है, वही आगे चलकर उनके विचार का, उनके थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा. एंड दे आर डूइंग द सेम. ठीक है, दे आर डूइंग द सेम. दिस इज हैपनिंग. ओके, and employ propaganda. It means propaganda is also used by this government. Now, liberal freedoms from government power, such as the civil liberties, individual rights and freedoms, were considered irrelevant. देखो सरकार कैसी है. Government is saying that don't ask for liberal freedom, don't ask for civil liberties. These demands are irrelevant. ये demands irrelevant है. There is no any meaning of these demands, and these your all such rights are subordinate to the interest of state. It means all power is concentrated in state. Don't demand for individual rights and individual freedom. Don't demand for civil liberties. Surrender all these rights. Surrender your individual freedom. Surrender your civil liberties. Okay, in state. State is above all. Okay, there is nothing above the state. Everything is inside the state. So in this situation, you will have to surrender all your rights to the state. राज्य को अपनी सारी शक्तियां आप समर्पित कर दो. Now, nationalism. मैंने कहा ना, there are different dimensions of nationalism. ये भी तो एक तरह का nationalism ही है कि लोग तैयार हैं अपने individual rights को surrender करने के लिए, civil liberties को surrender करने के लिए. This is also a kind of nationalism. ये भी एक तरह का nationalism है. This is also a kind of patriotic sentiments, but it is what? Misdirected nationalism. ये nationalism है, but लोगों को क्या किया गया है? ब्रेन वॉश किया गया है, और ये nationalism आपको गलत दिशा में ले जा रहा है. This is misdirectional nationalism. And what will happen here? Okay, so this is a part of nationalist ideology. It was concerned only with Germany and German interest. It means Germany में जो कुछ भी हिटलर की पार्टी कर रही है, द वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? वी आर डूइंग दिस टू, ओके, make Germany one of the powerful nation of Europe, and we are trying to promote and protect German national interest. हो तो गया नेशनलिज्म. ठीक है, सब कुछ समर्पित है किसके लिए? जर्मनी के लिए. They are saying like this कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? जर्मनी के लिए. We want to restore the German economy. They are saying this all is done for what purpose? Because Germany economy has been damaged after First World War. Economic restrictions were also imposed. Important German territories were taken away. Germany economy has been damaged. So we are doing all this to restore German economy. हम German economy को restore करना चाहते हैं. We want to achieve the level of economic self-sufficiency. We also want to achieve this level of economic self-sufficiency, and we want to rebuild our military, okay, and we want to provide protection to the German people, and we are doing all this for. यही तो नेशनलिज्म है. नेशनलिज्म इससे बाहर कहाँ होता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित. ये पोएम है ना, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं. दिस इज नेशनलिस्ट पोएम कि मेरा सब कुछ इस देश के लिए है. यहाँ पे तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित, धन समर्पित, इंडिविजुअल राइट समर्पित, सिविल लिबर्टीज समर्पित, एवरीथिंग इज ओके सरेंडर्ड फॉर टू मेक जर्मनी पावरफुल.
सब कुछ लोगों ने कहा ले जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट, सिविल लिबर्टी, कुछ नहीं चाहिए, सब हमने स्टेट को दिया। क्यों? क्योंकि स्टेट को पावरफुल बनाना है। तो लोगों में ये जोश कहाँ से आ रहा है? ठीक है, प्रोपेगेंडा। ओके, दैट आई विल डिस्कस, वो भी डिस्कस करूंगा। द नाजीज हैड लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग और इम्प्रूविंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक्सेप्ट टू एडवांस जर्मन इंटरेस्ट। कहा आईआर ओ आर पढ़ने में कोई खास उनका इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे भी जर्मनी के इंटरेस्ट की बात आएगी, they will try to maintain diplomacy with some country if there is any scope of promoting German interest. Otherwise, they are not at all interested in international issues. जहाँ पे कोई टेरिटरी लेनी है, जहाँ पे जर्मनी के कुछ मतलब उसकी बात है, प्रॉफिट की बात है, सो दे विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अदरवाइज दे डोंट थिंक अबाउट दिस इंटरनेशनलिज्म। का अपना आईआर अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। आईआर की जरूरत तभी पड़ेगी जब किसी जर्मन इंटरेस्ट को सॉल्व करना है। So they believe like this. Only priority is promoting German national interests. They detested diplomacy and despised multilateral groups like the League of Nations. यानी कि after First World War, by this Paris peace settlement, an organization was formed that is called League of Nations. जर्मनी को कहा गया बनोगे तुम मेंबर। क्या करता है जर्मनी 1919 में? का जो हुक्म मेरे आका, बनूंगा मैं मेंबर। But when Germany will become powerful, what Germany will do? Okay, he will resign from this League of Nations. का अब मैं रिजाइन कर रहा हूँ लीग ऑफ नेशन से, अब मैं लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं हूँ, जिसको जो करना है कर लो। It means when Germany becomes powerful, League of Nations is for what purpose? So that we could solve, the nations could solve their disputes, okay, through diplomatic methods, through negotiations, okay. But Germany, okay, resigned from this membership of League of Nations। कहा हमें डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है, वी आर रिजाइनिंग, हम अपना झगड़ा खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये अप्रोच किसी में कब आता है? कि मेरा मामला है, मैं देख लूंगा। ठीक है, पता चला आपके घर में कोई क्राइम आ गया, पुलिस आ गई, सर एफआईआर दर्ज करवानी है क्या? आपके तो नहीं, जाओ, हमारे घर कुछ नहीं। इसका मतलब क्या? यू आर कैपेबल टू सॉल्व द चैलेंज बाई योर सेल्फ। ओके, दिस विल ओनली हैपन when you will concentrate power in your own hand. So some people who want to take revenge, they don't do FIR. वो FIR करेंगे ही नहीं, they will not take help the police. वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और जब ऐसा होगा तो वायलेंस तो बढ़ेगा ना। The same will happen in Germany also. The country is saying that हमें कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं चाहिए, हम अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। Now Hitler and his followers had no intention of honoring or abiding by existing foreign treaties or negotiating new ones. इसका मतलब हिटलर is not interested in following any provisions of the treaty that has happened earlier. पहले जितनी भी ट्रीटी हुई है उसका कोई भी प्रोविजन ये मानेगा नहीं। क्लियर? और he is also not interested in signing new treaties. It means what is his outlook towards this internationalism? Okay, कैसा है आउटलुक इंटरनेशनलिज्म को लेकर? This is very, you can say that, is not interested in solving the problems with the diplomatic methods. Obviously he is inviting wars. ऐसा रूलर क्या कर रहा है? वॉर को इनवाइट कर रहा है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, he is inviting war, he is inviting challenges for the German people। okay, now the next point, militarism. This is also very clear that if you want to make Germany one of the powerful country in Europe, you will do what? You will focus on building your military strength। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ को क्या करना था? बिल्ड करना था। अच्छा, पेरिस पीस सेटलमेंट में क्या हुआ था? मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड, पता है ना आपको, डीमिलिटराइज जोन का कॉन्सेप्ट। ओके, प्लस यू कैन नॉट मेंटेन अ पावरफुल नेवी। जैसे आई विल जस्ट टेक अ मैप, दिस इज द एग्जांपल, यू कैन टर्न इट बेटर। Are you getting this image on the screen? Germany. This is Germany, and this zone was DMZ और demilitarized zone। ये वाला जो जोन है ना, ये आपको दिख रहा है ना, this zone, this was a
सेंसिटिव एरिया और द सेंसिटिव जोन, ये जर्मनी का, ठीक है, एक मिलिट्री, फॉर एग्जांपल इन इंडिया चाइना बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर, ऑल दीज आर द सेंसिटिव इन द सेम वे, ये भी सेंसिटिव जोन है, ओके। एंड दिस एरिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ, in this area the concept of DMZ was applied, okay, in the radius of 50 km demilitarized zone. It was demilitarized zone. German soldiers could not enter with arms and weapons in this particular area, but what will happen, ये एरो मार्क दिखला रहा है ना, Hitler did what, Hitler did not follow the provision of DMZ, okay, यहीं पे सबसे ज्यादा आर्मी की प्रेजेंस कर देगा विथ आर्म्स एंड वेपन्स, ठीक है ना। तो इज ही अबाइडिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, क्या वो मान रहा है पेरिस पीस ट्रीटी which was signed in 1919? No. When Hitler comes to power, he will not follow the provision of demilitarized zone. यहाँ पे वो अपने आर्म्स आर्मी स्टेट सेटलमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश करेगा. दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन और हिंट. फॉर एग्जाम्पल दीज एरियाज, देखो ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, एरो मार्क लगा हुआ है ना, ऑल दीज एरियाज वेर यू सी द एरो मार्क, ओके, यहाँ देखो, all these areas were later occupied and annexed by Germany. जर्मनी ने इन सारे एरियाज को क्या किया, ऑक्यूपाई किया, एनेक्स किया बाय फाइटिंग वॉर. क्लियर? So what Germany is doing? Is Germany under the leadership of Hitler following the international treaties? Not interested at all. Okay? Not interested at all. So Germany was not interested in solving the challenges with diplomatic means. So obviously this will create new challenge. Clear? Obviously this is going to create new challenge, and we can say that Germany was inviting war in this sense. Germany was inviting war. Okay, so Hitler believed in what? Hitler believed in rearming. Hitler believed in rearming and expanding. Look here, Hitler believed in rearming and expanding Germany's armed forces. ठीक है, कि जर्मनी में आर्म फोर्सेस को क्या करना है, ठीक है, पावरफुल बनाना है, मिलिट्री को क्या करना है, पावरफुल बनाना है, राइट. दिस ऑल वी नीड टू डू. नाउ rearmament would be carried out in defiance of the restrictions imposed by the Treaty of Versailles. So obviously when you will do rearmament, what does it mean? You are defying the TOV, Treaty of Versailles. Clear? You are breaking the provisions of TOV, and Germany was doing this. Hitler also considered military strength essential for expanding the German state. It means that if we want to make German state powerful, okay, so what is needed? Military empowerment, military strength. Okay, Nazi party was fundamentally militaristic, as evidenced by the size and popularity of party's paramilitary. ठीक है, the party has own paramilitary groups also. Nazi party की भी अपनी आर्मी थी. Got it? So it all shows that their focus was on militarization, and militarization will invite war in future. What about expansionism? Clear? Expansionism को लेके क्या अप्रोच था? So I have already discussed with you, okay, the concept of, याद करो, लास्ट क्लास में बताया था, ग्रेटर जर्मन रेक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरेम, बताया था ना. व्हाट इज ग्रेटर जर्मन रेक? रेक 1, रेक 2. In this period, Hitler is committed to bring all those territories which were the part of Germany, or the German territories, or the territories where German speaking people were living, in Reich 1 and Reich 2. He will include all those territories here in Reich 3. And this will become what? It means Reich 1 plus Reich 2 territories. All these territories will be included in Reich 3. And this is what? Greater German Reich. What is Lebensraum? He will also take एडिशनल टेरिटरीज. कल एग्जाम्पल बताया था, हिटलर की साइकिल आपने घर में रख ली है, तो हिटलर पहले तो अपनी साइकिल लेगा और फिर क्या करेगा, आपका घर भी लेगा. दैट इज व्हाट? लेबेंसरम, एडिशनल टेरिटरीज. ओके, सो नाजीज, हिटलर, ओके, दे ड्रीम्ड ऑफ यूनिफाइंग ऑल जर्मन स्पीकिंग आर्यन पीपल ऑफ यूरोप इनटू अ ग्रेट जर्मन स्टेट. हिटलर ने कहा जहां जहां जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं, all those areas, all those territories where German speaking people live, all those territories will be part of Germany. सबको मैं जर्मनी में मिला लूंगा, किसी भी एरिया को छोड़ने वाला नहीं.
all that will be the Germany, and that is what Greater German state. And to achieve this, Hitler believed his regime would need to acquire Lebensraum. I have already discussed this idea, a living space to accommodate the needs of the new Germany. कहा Lebensraum means living space, it means adding new territories. ये चाहिए, हम बड़े सुपीरियर लोग हैं, कल्चरली एडवांस लोग हैं. जैसे मान लो कि इफ यू आर लिविंग इन 1 BHK फ्लैट और यू आर सेइंग दैट एडिशनल स्पेस चाहिए, ठीक है, तो आई वांट 5 BHK फ्लैट और इंडिपेंडेंट हाउस फॉर दैट पर्पस. तो ये अप्रोच है, लिविंग स्पेस फॉर दिस सुपीरियर कल्चरल ग्रुप. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम HP. दिस HP, अच्छा आप लोगों ने नाम नहीं लिखा है HP. ओके, HP हरिप्रिया नहीं, हरिप्रिया तो अलग है. ओके, genocide, what is genocide? What is genocide? Clear? The inferior races, according to Hitler, according to Nazis, who are the inferior races? Jews. Clear? So massacre of Jews in large numbers is known as genocide. ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? इसी को हम क्या कहते हैं? genocide कहते हैं. ठीक है, that is maintaining genetic hygiene. ठीक है, और ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. नाउ द लिविंग स्पेस वुड बी सीज्ड, ये तो बता दिया आपको. नाउ रेशियलिज्म, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट दैट जर्मन रेसेस आर मास्टर रेसेस. अपने आप को क्या कह रहे हैं? मास्टर रेसेस, सुपीरियर रेसेस. और दूसरे लोग क्या हैं इनकी नज़र में? ओके, inferior. I have already discussed this. Now some student has asked this question to me in the last class, that about conservative traditions and traditional values. बोर तो नहीं हो रहे हो ना? ठीक है, because when I will discuss this will make you more thoughtful. 2-4 क्लास कम और ज़्यादा से कुछ नहीं होता है, right? Once you do prepare, so you must have the entire understanding of that chapter, because I have also faced this challenge in my student days कि क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, ओके, चैप्टर फिनिश हो गया, उस टीचर के पास मैं गया क्यों? बिकॉज दैट टीचर वॉज अ ब्रांड. ठीक है, आई पेड द फी कि जो सबसे महंगा टीचर है उसी से पढ़ना है. एंड देन व्हाट हैपेंड? ओके, ओके, द टीचर सजेस्टेड लिस्ट ऑफ बुक्स. आई वॉज ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट, आई वॉज एबल टू रीड दोज बुक्स. मैं बुक्स पढ़ने लगा, मतलब भैंस भाग गई इधर, घंटी बजा दिया उधर. ठीक है, बस पढ़ते पढ़ते टीचर बन गए. ठीक है, ये नहीं करना. गॉट इट? ओके, जितना समझो जितना पढ़ो उस पर कमांड बना लो, बस. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, कौन मिस्टर जॉन ने बुक लिखी है कि मिस्टर सोहन ने लिखी है कि मोहन ने लिखी, इट डज नॉट मैटर. एनी टॉपिक व्हाट वी रीड, वी मस्ट बी फैमिलियर विद द एसेंस ऑफ दैट टॉपिक. हमें उसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, दिस इज द ओनली पैरामीटर. इफ समवन आस्क यू, बताओ, है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, एंड यू आर सेइंग कि रिवीजन करके बताऊंगा, इसका मतलब योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड. कुछ तो बताओ उसको. इफ समवन आस्क यू कि मानसून का मैकेनिज्म क्या है, तो उसको समझा पाओ आप. ठीक है, हो सकता है कि यू विल फॉरगेट सम फैक्ट्स, बट इफ यू आर म्यूट एंड इफ यू आर सेइंग दैट एक बार रिवाइज करके बताऊंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल, वेराइटी ऑफ सॉइल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून, ओके, साइक्लोन क्या है, इट मीन्स दैट योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड. दिस इज द सिंपल पैरामीटर. ठीक है, कोई सारी चीज़ें बाद में आती हैं, स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड टीचर, सब बाद में आता है. हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? कुछ आइडिया बन रहा है आपके दिमाग में? व्हेन आई से नाजिज्म, व्हेन आई से हिटलर, व्हेन आई से मुसोलिनी, व्हेन आई से फासिज्म, तो कुछ तो इम्प्रिंट आया ना दिमाग में, आप बात कर सकते हो. दैट इज द मोटिव ऑफ आवर स्टडी. ठीक है, नाउ कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ नाजी आइडियोलॉजी. मैंने हमेशा कहा है, जो भी फासिस्ट पावर्स होंगी या नाजी पावर्स होंगी, उनका कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ इक्वेशन बड़ा तगड़ा बैठेगा. मेरी बात समझ गया ना? क्योंकि वो बहुत प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी नहीं है. मेरी बात समझ गए? दैट विल हैपन, दिस इज फॉर श्योर. नाउ व्हाट वी सी दैट नाजीज ऑफन पेंटेड देमसेल्व्स एज अ न्यू मूवमेंट. उन्होंने कहा कि भाई हम न्यू मूवमेंट है, वी आर रिवॉल्यूशनरी, बट व्हाट इज द रियलिटी हियर? बट दे वर नॉट averse to promoting or exploiting traditional values. Hitler frequently spoke of promoting long-standing German values, including Christian beliefs and Volkisch connections to the land. He often harked back to the 19th century when Germany was ruled by men of steel like Otto von Bismarck
and German society was relatively destabilized. Socialism, liberalism, democracy and women rights. देखो हिटलर क्या कर रहा है, पावर मिलने से पहले अपने स्पीचेस में वो किस चीज की बात कर रहा है, वी हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, वी हैव स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल वैल्यूज, ओके, the values that Germany inculcated from the Frankfurt Assembly, the values we developed during this process of unification of Germany. बिस्मार्क वगैरह की भी खूब तारीफ कर रहा है. बट व्हेन हिटलर विल गेट पावर व्हाट ही विल डू, मैंने कहा कि वहां पे ओपिनियन बदलता रहता है. व्हेन हिटलर विल गेट पावर व्हाट ही विल डू, ओके, he will do what, he will promote the conservative elements, and when he will promote the conservative elements it will ensure the subordination of women. सबॉर्डिनेशन ऑफ women को क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा. मेरी बात समझ गया ना, सबॉर्डिनेशन ऑफ women. इसके अलावा भी ये सारी चीजें, बिकॉज राइट्स विल बी सप्रेस्ड हियर. ओके, नाउ इकोनॉमिक prosperity, sovereignty, yes, this was one of the most agenda. Third way I have already discussed with you that this period is Nazi Germany 30 to 33, 34 to 45. So before this, one way or one you can say that option was capitalism, and whenever capitalism will come, okay, so liberal beliefs and principles, parliamentary system, individual rights, all this will come together. ये सब capitalism के साथ आता है. In polity we'll discuss these things कि capitalism के साथ ये सारी चीजें आती हैं. Now when we talk about socialism, clear, socialism, so what we see, obviously authoritarian government will be there, state will be the most powerful thing here, right to private property will be taken सोशलिज्म में, बट इट विल फोकस ऑन इक्वलिटी. इसका फोकस ज्यादातर कहाँ होगा, इक्वलिटी पे. नाउ दिस इज द थर्ड वे, नाजिज्म एंड फासिज्म. क्लियर, ऑथोरिटेरियनिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म है, बट राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी व्हाट वी सी इज ग्रांटेड. फासिस्ट इटली में भी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट किया. नाजी जर्मनी में भी प्रोटेक्ट किया एक्सेप्ट द ज्यूज. दिस इज वन थिंग. और डिफरेंस क्या है, so capitalism and socialism both were in the form of international movement. They want to promote their ideas at, okay, international level. They want to bring more and more countries in their influence, but this is not true with fascism and Nazism. The only objective of fascism and Nazism is to protect and promote their national interest. उनको खुद का national interest क्या करना है, promote करना है, protect करना है. This is the only objective, right? Now what we see is that, okay, the core ideas now you are familiar with. Now we are moving ahead, okay. Right wing or left wing, I have already discussed that this is a debatable topic, that Nazism, fascism is right wing or it is left wing. Debatable है ना, okay. Historians opinions are divided, ठीक है. सो देर आर आर्ग्यूमेंट्स कि किस कैटेगरी में रखें, राइट विंगर में रखें कि लेफ्ट विंगर में रखें, राइट. तो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाजिज्म सजेस्ट दैट नाजिज्म एंड फासिज्म बोथ वेयर राइट विंग. कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग से क्या लगता है, राइट विंगर, गॉट इट. बट अदर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस, ओके, अगर हम सेकेंड ग्रुप की देखें, सो इट अपीयर्स एज लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, बट किसी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, न राइट विंग में फिट बैठता है न लेफ्ट विंग में फिट बैठता है. गॉट इट. लेफ्ट विंग में लेके आओगे तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मामला फंसा देगा. गॉट इट, ओके. सो हिस्टोरियंस डिबेट ऑन दिस टॉपिक, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ थर्ड वे और द थर्ड ऑल्टरनेटिव बिटवीन दिस पीरियड. ये थर्ड वे है, थर्ड अल्टरनेटिव है, ओके. So in simple we can call this third way or the third alternative. Now Holocaust, okay. Holocaust का मतलब क्या है, okay. The Jews, the minorities, okay, who were considered inferior will be tortured, okay. उनको torture किया जाएगा. Gas chambers and many other methods of torture were used. Even you can say that new brutal means of torture, ब्रूटल मेथड्स ऑफ टॉर्चर वे डिस्कवर्ड. हॉलीवुड में बहुत सारी भुतिया फिल्में आती है जिसमें लोगों को काटते पीटते हैं, तरह तरह की कुर्सियां होती है जिसमें बिठा देते, टॉर्चर करते. वो सारे इंस्ट्रूमेंट किसने डिवाइस किए थे, किसने खोज करी थी, नाजी जर्मनी ने. देखा होगा, यू मस्ट हैव वॉच्ड इट इन हॉलीवुड मूवीज, that there are some chairs, people are put, hands are tied, they are tortured in different manner,
The people had different kind of instruments to torture. All new instruments were discovered, that how to kill the people. But before dying, the person must be tortured to its extreme heights. Okay, gas chambers were used for this purpose. So the people were arrested, Nazis were arrested, they were put in the camps. Clear? And German officers will ask them to write letters for their home. कहेंगे लेटर लिखो अपने घर पे, ठीक है? And the Jews will be asked to write letters, and they will ask them to write 500 letters, 1000 letters. इतने सारे लेटर लिखवा लेंगे एडवांस डेट में, that I am writing this letter on 5th January, I am writing this letter on 5th March, I am writing this letter on 10th October, I am writing this letter on 31st December, I am writing this letter on 1st January 2025, I am celebrating Happy New Year. बट किसी ने न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट किया, लेटर लिखवा लिया और ले जाके किधर डाल दिया, गैस चैम्बर में डाल दिया, और मजा लेते रहे, लेटर इनके घर पे पहुंचाते रहे. क्रुएल्टी की लिमिट है, that the person was killed and you are sending the letters at his home that yes I am fine, I am in the camp. तो इसको कहते हैं, ठीक है, लोगों को टॉर्चर करना. ये भी टॉर्चर करने का नया तरीका था. that the people, the Jews will, the family members will still have the hope कि शायद इनसे इन फ्यूचर मुलाकात हो जाए, but one day the hope will die. Clear? So this is called Holocaust. The Holocaust did not start all of a sudden in a single day. होलोकास्ट की जब भी शुरुआत होती है, ओके, इन सोशल इश्यूज आई विल डिस्कस, इसका एक पूरा का पूरा प्रॉपर है ना स्टेज होता है. तो द फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ जीनोसाइड और होलोकास्ट इज व्हाट. पहला स्टेज क्या होता है? इट्स नॉट गैस चैम्बर, गैस चैम्बर तो बाद में आएगा, गला बाद में काटा जाएगा. फर्स्ट स्टेज क्या होता है? प्रोमोटिंग हेट स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी, एंड दिस इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन द democratic countries and the system. We cannot tolerate if any group is promoting hate speech against any minority group, because ultimately this is going to do what? This is going to break the fabric of our society. इससे ultimately destruction ही आएगा. So we should not promote such kind of hate speech. तो जर्मनी में जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से तो हुई थी, promoting hate speech against minority. वो क्या था कि Jews are responsible for Paris Peace Treaty. They signed this Paris Peace Treaty. They are the conspirators. They are responsible. They have joined hands with the Britain, France, like countries. Okay, they are responsible for the ill fortunes of the country. Jews are responsible. How Jews are responsible? World War आपने लड़ा, आप हार गए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं ट्रीटी साइन करने के अलावा. But Jews were blamed first. They were labeled as anti-nationals. तो पहले आरोप लगाओ, एंटी नेशनल साबित करो, एंड देन दिस विल हैपन ग्रेजुअली. दिस विल नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन. हिटलर केम टू पावर contesting elections 1930-32. he came to power using the legitimate means. election से वो आया था. got it? Now the next point is what? the Nazi regime adopted laws and regulations, okay, to crush Germany's independent media. इंडिपेंडेंट मीडिया को क्या किया? दे क्रश्ड दिस जर्मनीज इंडिपेंडेंट मीडिया. नाउ मीडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट. नाउ इन जर्मनी द मीडिया वाज स्टेट कंट्रोल्ड. स्टेट वाज कंट्रोलिंग मीडिया. ठीक है, रेडियो पे क्या न्यूज आएगा ये कौन तय करेगा? स्टेट, राइट? डिबेट्स हु विल डिसाइड? स्टेट विल डिसाइड. एंड रेडियो एंड प्रिंट मीडिया वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, नो एनी जर्नलिस्ट कुड राइट what he wants to write. State will give directions कि न्यूज़पेपर में आपको क्या लिखना है, राइट? रेडियो में क्या डिबेट करना है, क्या डिस्कशन करना है. ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द स्टेट. सो इट बिकम्स very dangerous situation for a country when the media is owned and regulated by the government. This should never happen because ultimately it will crush the individual rights of the people. इससे लोगों के अधिकारों का ही हनन होने वाला है. That disseminated hate speech. or what media did? What independent media and radio and print media did? They helped in the promotion of hate speech. मीडिया ने क्या किया? हेट स्पीच को बढ़ावा दिया. मीडिया डिड व्हाट? ओके, मीडिया हेल्प्ड इन द प्रमोशन ऑफ एंटी सेमेटिक कैंपेन अगेंस्ट ज्यूज. मीडिया ने उसमें हेल्प की. मीडिया डिड व्हाट? ओके, मीडिया प्रोमोटेड दिस आइडिया ऑफ रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स. ठीक है,
जहाँ पे मीडिया, प्रिंट मीडिया इज डूइंग व्हाट, प्रिंट मीडिया इज प्रोमोटिंग दीज, ठीक है। जेनेटिक हाइजीन के कॉन्सेप्ट को आगे कौन बढ़ा रहा है, प्रिंट मीडिया बढ़ा रही है, इसीलिए तो लोगों का ब्रेन वॉश हो गया। ओके, एंड इट विल हैपन इन अ फ्यू इयर्स, इट विल नॉट हैपन इन अ सिंगल डे। मीडिया आल्सो promoted what, disinformation. And what is disinformation? I have already discussed with you. If you are giving false information with some intention, got it, with some plan in your mind, that is what disinformation, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देना। एंड द मीडिया डिड व्हाट, मीडिया प्रोमोटेड लाइज। सो मीडिया वाज स्टेट कंट्रोल्ड, it was in the control of Nazis. Now the media campaigns contributed significantly to normalizing atrocity crimes. It means there were crimes of atrocities against the minorities, Jews, okay, Romanians, and media was not taking these crimes as seriously. मीडिया टुक दीज क्राइम्स एज वेरी नॉर्मल। जैसे आपके जूते के नीचे आके कॉकरोच मर गया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया को, वैसा माहौल बनाया गया कि ज्यूज के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीडिया नॉर्मलाइज द इंटायर सिचुएशन। नाउ दिस फैसिलिटेटेड द हॉलोकास्ट। इससे किस चीज को बढ़ावा मिला, हॉलोकास्ट को बढ़ावा मिला। इससे किसको बढ़ावा मिला, जेनोसाइड को बढ़ावा मिला। द प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसिक्यूशन एंड एनिहिलेशन ऑफ 6 million Jews, children, women and men. ये डाटा देखो, 1 million is equal to 10 lakhs and 6 million is equal to how much, 60 lakh people, Jews were killed in Germany. And in these 60 lakh people, there were children also, there were women also, there were men also. Okay, women were raped, they were brutally tortured. Okay, so inhuman crime against humanity was done in Germany. And in all these things, who prepared the ground, media. Media prepared the ground. Okay, now at least 500,000 Roma and Sinti by Nazi Germany or the racist state, ठीक है ना, 500,000 दूसरे भी थे, but the majority number was the number of Jews. Clear, the people were killed in large numbers. Now what we see now, by getting idea of this chapter, do you consider that individuals should never compromise about their individual rights? कभी compromise नहीं करना चाहिए. We should never surrender our individual rights even for the sake of the nation, because in that case the nationalism is misdirected nationalism. ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स को कर्टेल करके आप कौन सा नेशन बना लोगे, राइट? If there is no any free speech and opinion, if the people are not having the right of free speech and opinion, if the media is in control, this is also not good for the democratic nations. Clear? And in the very first class, I have already discussed with you that among the top 10 threats, one threat is what? Disinformation, misinformation. In the very first class of world history, in introductory class, I have discussed about that. आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है ना, वो यही है कि अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले. ठीक है, डिजिटल मीडिया आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, डिजिटल रिवॉल्यूशन आया. नाउ थॉट पीपल थॉट दैट नाउ इन्फॉर्मेशंस आर इजीली एक्सेसिबल. हम घर पे बैठ के क्लास कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फी. बट नाउ द मीडिया इज डिसाइडिंग कि आप वीडियो किसका देखोगे. सौरभ गोस्वामी की वीडियो पे 1000 व्यूज भी नहीं होंगे, राइट? दोज हु विल पे, they will decide. ठीक है, now what you are watching on your social media, you are not deciding. ये decision आपका नहीं है, someone else is deciding that what will you. Got it? So this is also what a part of propaganda, and it should not be there. ये होना ही नहीं चाहिए, right? If any platform is neutral, so it should be accessible to all. Now the next important thing is Nazi regime and its racist collaborators violated human rights. They committed atrocity crimes against people with disabilities, Germans of African descent, LGBTQ community people. उनके rights को तो बिल्कुल नहीं accept करेंगे, right? Poles, Soviet prisoners of war, political dissenters, and it means the people were brutally tortured and killed. The Holocaust did not start with the gas chamber, but it started with hate speech against a minority. So we should always be alert. Okay? If someone is promoting hate speech against any minority group, we should criticize. Because if we will not criticize, okay, a time will come when we will have to face the consequences of this. Clear?
That is the most important thing. We need to focus on the solution part. If you have some problem or any other group has a problem, so what is the solution? Promoting hate speech is not the solution. We must need to find ways to solve any problem, to solve any challenges. Now what is propaganda? Okay, Nazi propaganda, fascist propaganda. Even this propaganda was used by the socialist during the Cold War. The propaganda was used by the country like US during the Cold War. तो प्रोपेगेंडा तो एक स्टेट पॉलिसीज का ही हिस्सा रहा है. Now what is the general meaning of propaganda? So generally we think that propaganda is what? Historical use. Okay, propaganda. देखो, generally the people believe that what is propaganda? So propaganda is the historical use. Okay, in historically it is used as a false and dangerous political persuasive device. False and dangerous politically persuasive device. ठीक है ना, यानी एक तरीका है जिससे, ठीक है, गलत तरह के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है. जनरली इट इज कंसीडर्ड. ओके, false, here word has been used, what? False. False and dangerous politically persuasive device means by use this हम कोई चीज persuade कर सकते हैं. Now the problem here is that, but what is the reality? In truth this is misconception. जब प्रोपेगेंडा की बात आती है तो हमें लगता है कि फॉल्स प्लस डेंजरस इट इज अ पॉलिटिकल परसुएसिव डिवाइस. बट व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ ये है कि जहां भी बात प्रोपेगेंडा की आती है तो प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है वो लोगों को सच लगने लगता है. यही तो प्रोपेगेंडा की खास बात है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ सम पीपल विल conspire a propaganda against me, so they will use this propaganda, methods of propaganda, but for this they will use some facts and informations about Saurabh Goswami. कुछ facts और informations आपके लेंगे, पूरा हवा में आपके खिलाफ propaganda नहीं बनाया जाएगा, but उस facts और information that is truth, उसके आसपास क्या किया जाएगा? एक fiction गढ़ा जाएगा. Got it? You will take some facts and information, and these facts and informations are true, and using this true facts and information you will do what? You will add a picture of fiction. यहाँ पे कुछ fiction और imaginary elements को आप लेके आओगे. Okay, and now your task is complete. When you will float this issue, people will start believing as truth. लोग इसको क्या मान लेंगे? ट्रुथ मान लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सेंसिटिव बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? Do you find that Gandhi, the personality of Gandhi, is criticized by some group of people in India today also? They take Gandhi in negative sense. ऐसा है कि नहीं? डू यू बिलीव? कुछ लोगों को गांधी को क्रिटिसाइज करते हुए पाओगे, और गांधी को क्रिटिसाइज करते करते लोग लिमिट भी पार कर जाते हैं. मैं लिमिट पार करने की बात कर रहा हूं. एंड व्हाट आई एम सेइंग, आई नो दैट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड आल्सो. ओके, पीपल यूज टू से दैट गांधी को मालिश कराना बहुत पसंद था, हमेशा उनके साथ लड़कियां रहती थी. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस नैरेटिव इज फ्लोटेड. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री? सुना है आपने कभी? ठीक है, so how this propaganda was promoted against Gandhi? There is a base, and what is that base? Gandhi himself writes, Gandhi खुद ही लिखते हैं, this is my weakness. And weakness in the sense what? Okay, यहाँ पे कोई गलत चीज की वो बात नहीं कर रहा है. He is talking about lean and thin personality, I am weaker and all this. ठीक है ना? तो वो मालिश की बात करते हैं, वर्जिश की बात करते हैं, but the people will use this fact and they will do what? They will distort. Okay, they will add a picture of fiction in this, and they will try to malign the personality of Gandhi. गांधी की पर्सनालिटी को क्या कर देना, ठीक है, गलत तरीके से पोर्ट्रे करना, पेंट करना. गांधी को आप इतना क्रिटिसाइज कर लेते हो, मटेरियल किसने दिया, कंटेंट किसने दिया? खुद गांधी ने दिया. All his weaknesses he wrote in his autobiography, My Experiments with Truth. And he also writes about the weakness of his father. अपने फादर की भी बुराई करते हैं, right? Gandhi's father, Mohandas Karamchand Gandhi, Karamchand Gandhi was his father. Okay, and he had 4 wives. Okay, so there was no any child from first 2 wife. Okay, केवल daughters थी शायद, है ना, और there was no any son. Now there was third wife also. Third wife से भी कोई son नहीं था. Now Gandhi's father
asked third wife that I want to do another marriage, मैं एक और शादी करना चाहता हूँ, because I want to have son. Now the third wife says that who will marry you? Gandhi's father says that in 24 hours I can marry. ठीक है, मेरा talent अलग ही level का है. And what he did, he married Putlibai, and Putlibai was the fourth wife of Karamchand Gandhi, and Mohandas was the son of Putlibai. ये बात हमें कैसे पता चला? गांधी ने खुद बताया, और वैसे भी पता चल जाता. Now what Gandhi writes that I don't consider this as a good. I considered it as a weakness of my father. Okay, that you are marrying in late 40s. Okay, and you are marrying for the wish of a son. बेटे के लिए आप मैरिड कर रहे हो. So this is a kind of patriarchal mindset, and I don't think that this is good. This is the age where we should opt for celibacy. ये वो समय है जब हमें ब्रह्मचर्य की तरह जाना चाहिए, but you decided to do the fourth marriage, and this is the indication of carnal desires of my father. ठीक है, ये मेरे पिता की यौन इच्छाओं को दिखाता है जो अच्छा नहीं है. Who is writing? Gandhi is writing about his father. किसके अंदर गट्स है कि अपने पिताजी के बारे में कोई एक वीकनेस के बारे में आप ऑटोबायोग्राफी में लिख दो? है किसी के अंदर गट्स? नहीं है. दैट्स वाई गांधी इज ग्रेट. इसलिए गांधी ग्रेट है. हम तो अपनी कमियां छुपाते रहते हैं, अपने दोस्तों की कमियां छुपाते रहते हैं, माँ बाप की तो दूर की बात है, राइट? एंड व्हाट गांधी डिड, okay, when you will read Gandhi, you will find that Gandhi talks about celibacy, and Gandhi also adopted celibacy, brahmacharya, after some time. Gandhi ने brahmacharya को भी अपनाया. And there are two meanings of brahmacharya suggested by Gandhi. One is what? The technical meaning, what we understand. And the second meaning is, okay, the regulated behavior, the disciplined behavior is also known as brahmacharya. ठीक है, अनुशासित तरीके से, ठीक है, रहना, ये भी ब्रह्मचर्य का हिस्सा है. So Gandhi writes about himself. Gandhi writes about his weakness. Gandhi writes about the weaknesses of his father, and that's why you got facts. And then you did what? You took those facts, created elements of fiction, and that is what? Propaganda against Gandhi. So do you understand the meaning of propaganda? In propaganda, the people will use some true facts about you, and around these facts they will add some fictional element, and in this way when this story will be floated, this will appear true. This is propaganda, and this is the beginning. ऐसा होता है, okay, and this is done with a intention. इसके पीछे क्या होता है? There is a intention behind this. Clear? Now this I hope you understood. Okay, ये समझ गया ना कि but in truth propaganda can be very often be based on a fact. However, the facts are represented in a way, they are represented in a way to provoke a certain feeling. इसका मतलब क्या है कि उन फैक्ट्स को फिक्शनल एलिमेंट्स के साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवोक अ सर्टेन फीलिंग और अ डिजायर्ड रेस्पॉन्स. आपको पता है कि जब मैं स्टोरी फ्लोट करूंगा, जिसके पास भी जाएगा तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, यू नो इट वेरी वेल. पहले से आपको पता है. when you are floating this story, you know that what will be the people's reaction. They are not mature enough to, okay, explore. They are not mature enough to further authenticate the truth, okay, and for this it is used. Yes, there was any question? Mm-hmm. Hmm. For example, if you want to know this answers, you have a good understanding of history now. You are spending almost 70 to 80 hours you will spend with me, and when I will finish this module of modern Indian history, अभी तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंटर ही नहीं किए हैं, when we will finish, you will know this answer कि गांधी नहीं होते तो भारत कब आजाद होता, गांधी के होने से डिले हो गया या टाइम, मतलब in order to get this answer you need to discuss these thoughts with a person, okay, having some logical explanations and having the right knowledge. ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलता है. ठीक है ना? तो आपको तो सही जानकारी मिलनी चाहिए ना. अगर आपकी जानकारी का स्रोत ही गलत है,
if as a teacher I am giving you answer and if my knowledge is biased, okay, so in that case you will not get the right answer and further you will promote that knowledge, आगे आप उसी knowledge को आगे ले जाओगे. Okay, so that is a challenge today. Okay, now we are coming to the next point. Propaganda is formally defined as the systematic propagation of information. ये समझ पा रहे हो एक एक लाइन को? What is propaganda? ये ऐसे में यूज हो सकता है, बार बार कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, नाजी जर्मनी, फासी जर्मनी, नेशनलिज्म, ये इससे जुड़ा हुआ ऐसे इसी बार देख लेना, मेंस में कुछ ना कुछ रहेगा, राइट, यू विल गेट ऐसे रिलेटेड टू दिस. तो सिस्टमेटिक प्रोपेगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज बाय इंटरेस्टेड पार्टी एंड द इंटरेस्टेड पार्टी हैज सम इंटेंशंस. इंटरेस्टेड पार्टी के कुछ इंटेंशंस होते हैं, स्पेशली ओके, intended to promote a particular use or point of view. Okay, it may be especially a controversial one. ठीक है, कोई ऐसी बात उठा दो, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, किसी कम्युनिटी के इमेज को खराब कर दो, किसी पर्सन के इमेज को खराब कर दो. मेरी बात समझ गया ना? ठीक है, अगर किसी इंसान को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर को मिलाइन कर दो आप, ठीक है, खत्म. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, ओके, and if someone floats misinformation about me, disinformation about me, attacks the character, what will happen? As a teacher, my identity will be diluted. Clear? Because I am here to teach my students the good thing, right knowledge. तो जब मेरा character ही judge होने लगेगा, तो what will happen? Okay, so this is done for some intentional purpose. I hope now you understand. Now let's discuss this term, disinformation. There are two terms. One is disinformation and the second is मिसइन्फॉर्मेशन. वर्ल्ड हिस्ट्री को आप केवल वर्ल्ड हिस्ट्री समझ के मत पढ़ो, इट विल हेल्प यू इन सेवरल अदर मॉड्यूल्स. मैं बार बार कहता हूँ, डिसइन्फॉर्मेशन एंड मिसइन्फॉर्मेशन. नाउ डिसइन्फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? तो देखो, इट रेफर्स टू इंटेंशनली डिसेमिनेटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन. देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्लस सम इंटेंशन, सम पर्पस. इफ these two factors meet, that is what? Disinformation. It means you are giving false information and this false information is given intentionally. और आपका intention क्या हो सकता है, right? So this is to manipulate the audience. ये हो सकता है, your intention is to manipulate the audience. You are giving false information to manipulate the audience. You are giving false information, okay, okay, so that you could give a conflicting information. आपने एक conflicting information को float कर दिया. There is a right information, there is a conflicting information. Now the people will be confused what is the right information. मेरी बात समझ गए? There is a right information, you did false, what? You give false information with the intention, and what is the information? That you will make that right information a conflicting information. Now the people will be trapped where to get the answer. Answer कहाँ से मिले? And you have promoted disinformation. काम आपका हो गया, ठीक है, the task is complete. This is disinformation. A common tactic is what? Mixing truth with false conclusions and lies. मतलब जो भी आप disinformation दे रहे हो उसमें truth का भी element होना चाहिए, ठीक है. अब मान लो कि मैं आपको disinformation दूं, ठीक है, कि आज सुबह मैं जगा, है ना, तो मैं मार्स प्लैनेट पे चला गया, ठीक है, वहाँ एक कप चाय पी और वापस में आ गया, तो फिर आप कैलेंडर देखने लगोगे, टुडे 1 अप्रैल है क्या, ठीक है, यही होगा ना. इस तरह का इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन, ये मजाक हो गया, दिस इज जोक, ठीक है, गॉट इट. सो दिस इज द इंटायर आइडिया दैट डिसइंफॉर्मेशन मीन्स हियर देयर इज अ इंटेंशन प्लस you do what? You promote false information with some intention. This intention can be political, this intention can be anything else, that is disinformation. Okay, this is a great challenge. Disinformation and misinformation, these are among the top 10 challenges, global challenges today. आने वाले 10 सालों में भी ये top 10 challenges में बना रहेगा, डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन, ठीक है. डिजिटल मीडिया आने से कम्युनिकेशन और हमारे पास इंफॉर्मेशंस के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट दैट्स इज इट दैट ओनली इंफॉर्मेशन? मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें तो हो गई. ओके, दिस ऑल हैपेंड. नाउ व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन? तो देखो, मिस इन्फॉर्मेशन सिंपली मीन्स व्हाट? ओके, गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, false information or incorrect information, but we are doing this unintentionally.
unintentionally, or there is no some particular purpose, कोई particular purpose नहीं है, unintentionally, ठीक है. For example, okay, मान लो कि I am teaching here, right? And after my class, suppose they are my parents and they don't like that I should go to clubs or like this, but I just send that, I say them that I am going to my friend's house, okay, he is very ill, he has asked me that please come and stay with me, so I will come the very next day, okay. And I said my parents that I am going for this purpose, but instead I went to some club, I stayed there whole night, and in next day morning I came to home. Now the information which I gave to my parents, that is what? Misinformation. That is not disinformation. वो disinformation नहीं है, वो क्या है? Misinformation. Got it? उसको हम क्या कहते हैं? Misinformation. वहाँ कोई वैसा बिगर एजेंडा नहीं है, बट डिसइंफॉर्मेशन के पीछे एक एजेंडा हो सकता है. सो दिस इज व्हाट फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दैट इज स्प्रेड अनइंटेंशनली. डिसइंफॉर्मेशन में क्या था? इंटेंशनली, राइट? विच इज द डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू द डिसइंफॉर्मेशन विच इज एन एक्ट ऑफ डिसेप्शन टू कन्विंस एन ऑडियंस ऑफ समथिंग. ये तो डिसइंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है. इट मीन्स दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन दैट डिसइंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड टू मिसलीड, मिसइंफॉर्मेशन इज नॉट. ठीक है. डिस इन्फॉर्मेशन का एक टारगेट है लोगों को धोखे में रखना. मिस इन्फॉर्मेशन का टारगेट धोखे में नहीं रखना है. मिस इन्फॉर्मेशन का जैसे इफ आई सेड माई पेरेंट्स दैट आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस बिकॉज ही इज इल, मैंने क्या किया? मैंने मिस इन्फॉर्मेशन दिया. बट इस मिस इन्फॉर्मेशन का पर्पस क्या है? इस मिस इन्फॉर्मेशन का पर्पस मिसलीड नहीं है. मैंने ऐसा अपने पेरेंट्स को इसलिए कहा क्योंकि वो ओल्ड है. आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट देयर सेंटिमेंट्स. ठीक है. मैं चाहता हूं कि दे आर ओल्ड, स्टिल दे मस्ट हैव दिस सेंस कि मेरा बच्चा मुझसे डरता है. एक बार मैंने कहा कि नहीं जाना है क्लब तो वो नहीं जाता है. तो आई एम रेस्पेक्टिंग देयर सेंटिमेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दैट मिस इन्फॉर्मेशन. मेरी बात समझ गया ना? इफ यू आर 30-35 years old, so you can say your parents जा रहा हूँ, जो करना है कर लो. But in this way you are going to hurt the sentiments of your parents. So you don't want to hurt those sentiments. Still you want to go to the club party. Then you did what? You gave false information. So you are doing what? Balancing. ठीक है. जैसे अभी एक न्यूज़ कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, तो आई स्टे हियर इन नोएडा, तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि बैंगलोर से एक आदमी गायब हो गया. ओके, अ पर्सन डिसअपियर्ड फ्रॉम बैंगलोर एंड द न्यूज़ वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वाइफ filed an FIR, okay, and also blamed the police that the police is not very active. उनको उसके हस्बैंड को ढूंढना चाहिए, पुलिस बहुत स्लो काम कर रही है. Then the police authorities started finding the husband. बैंगलोर से गायब हुआ हस्बैंड नोएडा में मिला, गौर सिटी में. Got it? And when the police arrested, ठीक है, तो क्लीन शेव करा के बाल वाल सब उसने हटा लिए थे, पूरा गेटअप बदल लिया था. ओके. देन द पुलिस सेड दैट किसने तुमको किडनैप किया? ही सेड दैट किसी ने किडनैप नहीं किया, मैं अपनी बीवी के डर से भाग के आया हूँ. पुलिस वाले ने पूछा प्रॉब्लम क्या है यार तुमको? कहा यार मुझे मेरी मर्जी से मेरे दोस्तों के साथ चाय भी पीने नहीं जाने देती. शी रेगुलेट्स एवरीथिंग. ओके. तो मैं भाग के आया हूँ अपनी बीवी के डर से. गॉट इट? तो देखो यहाँ पे अगर उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो इसको क्या किस कैटेगरी में रखोगे? मिस इन्फॉर्मेशन की डिस इन्फॉर्मेशन? मिस इन्फॉर्मेशन. ये उसका पर्सनल इशू है, राइट? इसमें ऐसा कोई उसका मतलब बिगर एजेंडा नहीं है. दैट इज ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन फॉर सम पर्सनल रीजन्स. बट डिस इन्फॉर्मेशन का जो वो कह सकते हो कि इंटेंशन विल बी द लार्जर. ठीक है. दिस इज अ सिंपल आइडिया अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन. फिर इन्हीं की कमी थी फेक न्यूज़ की. ये भी भाई साहब आ गए. फेक न्यूज़, व्हाट इज फेक न्यूज़? लेट्स डिस्कस. फेक न्यूज़ क्या है? तो फेक न्यूज़ जनरली रेफर्स टू मिसलीडिंग कंटेंट फाउंड ऑन इंटरनेट, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. ठीक है. इसमें ऐड कर लो डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इन दोनों को भी ऐड करो. ठीक है, राइट? फेक न्यूज़ क्या है? मिसलीडिंग कंटेंट दैट इज फाउंड वेयर? ऑन इंटरनेट, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. ओके, दैट इज फेक न्यूज़. कंटेंट क्या होगा? मिसलीडिंग होगा. दैट इज फेक न्यूज़, राइट? फेक न्यूज़. There are different types of fake news where real facts are what? Slanted. Real facts और information में थोड़ा बहुत बदलाव करके, modify करके उनको आगे present किया जाता है, right? Okay. Large scale hoaxes are there. Jokes taken at face value. Intentionally deceptive content. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. There are 5 types. इससे भी ज़्यादा है. This is the different opinion.
written by different scholars. तो एक scholar ने कहा कि ये 5 types of fake news we see. Okay, so in this fake news, what we understand is what real facts are, okay, slightly done what, okay, slanted. थोड़ा बहुत रियल फैक्ट्स में बदलाव करके फेक न्यूज़ को सामने लाया जाता है. इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि ऑडियंस वो हेडलाइन देखते हुए भी क्या होती है, आकर्षित होती है. जैसे आई वॉज रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फॉर प्रमोशन, तो आई विल स्टार्ट प्रमोशन आफ्टर 3 or 4 months. तो माई टीम मेंबर सेड दैट सर टाइटल कुछ ऐसे रखते हैं. मैंने कहा कैसा टाइटल रखते हैं, तो उन्होंने टाइटल सजेस्ट किया. आई वॉज डिस्कसिंग पार्टीशन इशू एंड कॉम्युनलिज्म, है ना. तो मैंने कहा जरा बताना कौन सा टाइटल रखें. देन द टीम मेंबर सजेस्टेड कि टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा आज़ादी की लड़ाई में. मैंने कहा भाग जाओ. ओके, so they said that people will watch the video. Got it? So why such kind of fake news is promoted? Okay, you can say that making the statements a little bit more sensational, or you are slightly misleading the sentence because the people will be attracted towards it. Now the question is that fake news comes in the category of misinformation or disinformation. आप कहाँ रखोगे इसको? Is it disinformation? नहीं, ये disinformation की कैटेगरी में आता ही नहीं है. Fake news does not comes in the category of disinformation. This is very interesting thing, that fake news does not meet the definition of disinformation or propaganda. Media promotes fake news, but ये propaganda की category में नहीं आएगा. Why it will not come in category? There is a reason. Okay, because okay, motivation, deception, profit. It means they are guided by the profit. For example, if someone suggested me that use this title, use this image, so that is to polarize the audience. Got it? To gain the attention of the audience. और attention audience का हो, हम polarize कर सके audience को, and the ultimate objective will be what? Profit. That your video will reach to the larger audience and you will gain profit by this. तो इसको ऐसे define किया जाता है fake news को. Got it? But ultimately there is some part of disinformation. एक clean sheet भी नहीं दी जा सकती fake news को. We cannot give completely clean sheet to the fake news, because in Nazi Germany, what media did? Media helped in the promotion of propaganda. So in Nazi Germany, the media which was promoting fake news, okay, that should be considered an act of promoting disinformation, an act of promoting propaganda, right? Now situations are not like that. But if we will give, okay, relaxation to the media, that we are accepting fake news because it is for the profit motive, it is for polarizing the audience. So who knows that the time will come when the same thing will become part of that propaganda. तो हम इतनी छूट, इतनी leverage नहीं दे सकते. That is the most important thing. But in technical sense, today political actors have been able to use this to fulfill their advantage by producing incendiary content that spreads rapidly through the grassroots online network. Some call it political astroturfing. जानबूझ के fake news फैलाया जाता है. So today we use this word political astroturfing. Okay, because this fake news will do what? This fake news will spread very rapidly at the grassroots level. और पॉलिटिकल एडवांटेज लेने में मेजॉरिटी का खेल है. किसको प्रभावित करने की जरूरत है? जिसका नंबर ज्यादा है, मेजॉरिटी. जिसका नंबर ज्यादा है उसके पास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है. बिकॉज एजुकेशन डिफाइंस आवर चॉइस. Always remember that in our society, education is one of the most important parameter. We are not defining our choices by ourselves. Our level of maturity, our level of understanding is defining our choices. For example, I am teaching world history, discussing the concepts in very much detail. Suppose there are 100 students in the class. This might be a possibility that 40 to 50 students will say that यार इतना अंदर जाके पढ़ा रहा है ये आदमी, दिमाग खराब कर दिया. ठीक है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्जाम. वो इस बात को नहीं समझते. so they will like some lighter content. The world history that is completed in 7 days. टीचर ने कहा वर्ल्ड हिस्ट्री इज फिनिश, बच्चे ने जाके पार्टी किया, आज मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई. भाई वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास नहीं खत्म हो गई, तुम खत्म हो गए, राइट? ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप कब खत्म करते हो. दिस इज द आइडिया. तो मेरी बात समझ गया ना, पूरी की पूरी बात, ये पूरी की पूरी स्टोरी है. तो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल एस्ट्रोटर्फिंग. ठीक है, जो लाइट कंटेंट होता है,
जिसमें फिक्शन का एलिमेंट ज़्यादा होगा, फैक्ट का एलिमेंट कम होगा, टाइटल्स बड़े ही शैलो होंगे, फैक्ट्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, गॉट इट। सेंसेशनल बना के न्यूज़ को दिखाओगे तो ये क्या होगा, दिस विल प्रोमोट वेरी रैपिडली, ये बहुत रैपिडली प्रोमोट होगा। अगर इसी पूरी की पूरी क्लास में, ठीक है, मैंने बस 10 मिनट का कंटेंट जोड़ दिया होता, मुझे पता है कि वीडियो पे 2 लाख लाइक्स कैसे आएंगे, आई नो दिस। बस मुझे 10 मिनट और बोलना था, कल के डेट में ये वीडियो वायरल हो जाती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन 24 आवर्स। आई नो दैट वॉट वॉज टू ऐड हियर, मुझे पता था ऐड क्या करना था, बट आई विल नॉट डू दिस, बिकॉज वेन आई विल डू दिस आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, गॉट इट, ओके। तो वो काम मैं नहीं करूंगा, मुझे पता है कि आई कैन डू दिस, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत पावर होता है, हिस्ट्री हैज द पावर ऑफ क्रिएशन, हिस्ट्री हैज द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इतना पावर होता है हिस्ट्री में। बट वी आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द customer to add the polarizing effect or the polarizing view, got it। so this is what fake news, कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, पोलराइजिंग द ऑडियंस, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हेन वी आर डूइंग दिस इट विल okay rapidly reach to the grassroots level। you watch TV channels, okay, you will see that the kind of news which they float and in the languages which they float, okay, they compromise, ठीक है। but why they are doing this, because they make news more interesting, तभी तो आप बैठ के सुनोगे 4 4 घंटे तक, नहीं तो आप फिल्म नहीं देखोगे, ठीक है। सो दे ट्राई टू मेक द न्यूज मोर इंटरेस्टिंग, ओके। एंड द सेम इज हैपनिंग विद द एजुकेशन ऑल्सो। आप बताओ कि एक ऐसी कंट्री जिससे कहा जाता रहा कि विश्व गुरु है, इंडिया वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ ऑल द वर्ल्ड, एंड टुडे व्हाट वी सी इन आवर कंट्री, व्हाट इज मोर पॉपुलर ऑन मीडिया, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, बताओ। स्त्री 2 का गाना कितना हिट हो गया, किसी भी एक टीचर का वीडियो दिखा दो जिसका व्यू स्त्री 2 के गाने से आगे चला गया हो, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो इंटरटेनमेंट इज मोर पॉपुलर। इन एजुकेशन हु इज मोर पॉपुलर, द एजुकेटर्स हु आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम और द इंटरटेनर एजुकेटर्स हु आर एट ऑल नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम, कौन ज्यादा पॉपुलर है। ये भी किस कैटेगरी में आता है, फेक न्यूज। आप तक क्या रैपिडली पहुंचेगा ये आप तय नहीं करते हो, ठीक है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तय करते हैं। व्हाट यू वॉच इट इज ऑल्सो, ओके, पहले से सारी की सारी चीजें तय होती है। so this is the entire idea that we discussed, okay। now this map I have already discussed with you, that what German Hitler will do, this is the aggression of Hitler. Hitler will do what, Hitler will invade these territories। so in next class I will discuss some factors, अगली क्लास में बताऊंगा that how Germany break the provisions of Treaty of Versailles, how Italy break the provisions of Treaty of Versailles, how League of Nations failed, and how Second World War started, okay, reasons for the outbreak of Second World War। and now when I will finish this topic, now look at the topics which we started from 1789 till 1945, all the events are connected or not, tell me one thing, all the facts are the part of a string of facts or not, yes, सारे इवेंट तो कनेक्टेड हैं। 1789, 1830, 1848, 1789, 1815, 1830, 1848, 1870, 71, 1870, 71 to 1914, what happened between 1914 and 1939, okay, all these events are connected, clear। so one chapter will be finished tomorrow, इसको मैं एक चैप्टर कहता हूँ, this is the single chapter from 1789 to 1945, this is one chapter because all the events are correlated with each other, right। if you have any doubt you can ask me, आज के लिए इतना ही, got it, ठीक है, yes please ask। no no मिस इन्फॉर्मेशन नॉट, मिस इन्फॉर्मेशन का तो बड़ा ही लाइट ऑब्जेक्टिव हो गया, घर में जो रोज हम 2 4 झूठ बोल देते हैं वो है मिस इन, got it। it's not, it technically it does not lie in the definition of disinformation, but all these things are debatable। when we look at the Nazi Germany, what happened, fake news was a part of disinformation propaganda, but today the scholars believe that this is not the part of disinformation। आज scholars believe करते हैं कि disinformation का हिस्सा नहीं है। in today's world, Nazi world it was true, and what they believe कि fake news क्या है, ठीक है, तो रियल फैक्ट्स को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं,
क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट सीकिंग, ऑडियंस का अटेंशन गेन करना, पोलराइजिंग इफेक्ट, ये सब उसके ऑब्जेक्टिव है। बट इसको हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, राइट? फेक न्यूज कब डिसइंफॉर्मेशन बन जाएगा, फेक न्यूज को कब स्टेट, कब पॉलिटिकल अथॉरिटीज अपने फायदे के लिए यूज करने लगेंगी, वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ दिस। मेरी बात समझ गया ना? तो टेक्निकली fake news is not a part of disinformation. Once it was, okay, and there is no a clear cut demarcation line. When fake news will become the part of propaganda, we don't know. When fake news will become the part of disinformation, we don't know. But in technical sense, fake news is apart from this disinformation. Fake news means profit seeking. Fake news means polarizing effect. Fake news means gaining the attention of the audience. Fake news means the objective is so that it could reach rapidly to the grassroots level. ठीक है? तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द आइडिया। ओके, तो बड़ा ही एक एब्सोल्यूट आंसर देना बड़ा मुश्किल है, ओके, बिकॉज दीज थिंग्स आर डिबेटेबल। अब कोई जर्नलिस्ट से बुला के पूछो कि फेक न्यूज डिसइंफॉर्मेशन है, कहेगा भाग जाओ, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये असली न्यूज है, दिस इज द न्यूज, व्हाई यू आर कॉलिंग इट फेक न्यूज? ओके, तो वो तो कहेगा फेक क्यों लगा रहे हो यार, इतना अच्छा न्यूज तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। गॉट इट? ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? ओके, मतलब आपको यू हैव टू थिंक कि कहाँ कौन से वर्ड को यूज करना है। गॉट इट? ओके, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड प्रोपागेंडा, कॉन्स्पिरेसी, डिसइंफॉर्मेशन, नहीं कर सकते। ओके, आप इंडिया का कंपैरिजन नाजी जर्मनी के साथ नहीं कर सकते, दिस कंपैरिजन इज नॉट गुड। ठीक है, पीपल डू इट। अगेन मैंने कहा ये भी क्या है, ये भी डिसइंफॉर्मेशन का हिसाब है कि फैक्ट में फिक्शन, थोड़ा सा नाजी जर्मनी के फैक्ट को उठाओ, थोड़ा सा इंडिया वाला कॉन्सेप्ट मिलाओ और हंगामा बजा दो कि इंडिया में फासिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, डिसइंफॉर्मेशन है। ठीक है, अफवाह उड़ाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया में और जर्मनी में, हिटलर में और किसी भी दूसरी कंट्री में। व्हाट वी सी इज देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, वी कैन नॉट कंपेयर, कंपेरिजन इटसेल्फ इज नॉट गुड। ठीक है, कंपेरिजन अच्छा नहीं है, दैट इज एन अटेम्प्ट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है, गॉट इट? ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? Political astroturfing means to gain political advantages. This is a simple meaning. Okay, they use this trick. Okay, this is political astroturfing. Okay, there is educational astroturfing also. वो भी हो रहा है, political astroturfing. Exactly, they used to get some, okay, you can say that advantage, okay, with the help of this fake news. ठीक है, ये भी होता है, right? That is the political astroturfing. Okay, इज इट क्लियर? पोलराइजिंग इफेक्ट को पैदा करना अपने फेवर, अपने सपोर्ट में, यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर द ओपिनियन ऑफ द मासेस कि वो आपके फेवर, आपके, दिस इज पॉलिटिकल एस्ट्रोटॉफिंग। द टॉपिक विच आई विल डिस्कस व्हेन आई विल कंक्लूड दिस चैप्टर, नेशनलिज्म, उस क्लास को जरूर अटेंड करना एंड आस्क ऑल योर डाउट्स। ओके, इफ यू विल से one day when I will finish this module, 2 hours, I will fix the session for addressing all the doubts. So if you have any doubt in your mind, so just write it in your notes and I will discuss everything related to this entire module. ठीक है, because यही सबसे बड़ी चीज़ है कि you must ask question, you must discuss with the teacher. Okay, the teacher must answer your question and this will take time. अगर मैं इतना कुछ करूँगा तो 7 days में नहीं फिनिश कर पाऊंगा ना वर्ल्ड हिस्ट्री भाई। In last class, I have already discussed Germany. Today, I did what? I discussed a lot of new things so that your thought, your horizon could be broadened. ये सिर्फ कहने से नहीं होगा कि टीचर आए और कह दे कि बच्चे को अपने सोचने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, एनालिसिस बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएगा बच्चा? दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर इज एन इनेबलर. Teacher will help the students so that the students could learn that how to develop that critical thinking or critical approach. मेरी बात समझ गया ना? तो टीचर्स रोल इज लाइक इनेबलर। ठीक है, आप सभी क्या हो? रॉकेट हो, मैं रॉकेट लॉन्चर हूँ, सही रॉकेट लॉन्चर मिल गया। ठीक है, राइट? चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, वेलकम।